Capacity model. When we talk about the children learning from the media, this model is published and this model is propagated. And let's see what is the capacity model. Many studies have shown that children of various ages learn from educational television, but they have not explained how children extract and comprehend educational content from these television programs. This model particularly address this particular research question, that how the children extract and comprehend information from the educational television programs. And this model was proposed by Shellman and Fish in his study, A Capacity Model of Children's Comprehension of Educational Content on Television. Attempt, and this paper was published in Media Psychology, one of the leading research journal in 2000. When we talk about this model consists of a theoretical construct with three basic components: processing of narrative, processing of educational content एंड डिस्टेंस। ये मॉडल जो है इन तीन कॉन्सेप्ट्स की बात करता है कि जो जो नैरेटिव है वो कैसे उसका बच्चे प्रोसेस करते हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको बच्चे कैसे प्रोसेस करते हैं कॉग्निटिवली, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे अफेक्ट करता है उनकी मेमोरी को। आइए इसको एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एजुकेशनल कंटेंट है और उसमें जो दिया गया नैरेटिव है, आपको ये समझना है कि एक तरफ जो एजुकेशनल कंटेंट है उसके जो फीचर्स हैं, एक तो वो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं, और दूसरी तरफ उसका जो नैरेटिव दिया गया है उस कंटेंट में जो बात एक्सप्लेन की गई है या जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है वो एक दूसरी चीज़ है, और उसको अलहदा से अंडरस्टैंड करना पड़ता है बच्चों को। और जितना ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा, उतना जो है वर्किंग मेमोरी जो है बच्चों की, उसके लिए इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और जितना इसमें डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, यानी जितना ये अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही इट वुड बी ईज़ियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। एंड बोथ थिंग्स, both educational content, feature of educational content and the narrative appeared in the content actually affect from the characteristics of the individuals, in which there are prior knowledge of content, interest in content, and then clarity of the presentation, explicitness of the content, and advanced organization of the content. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग को, और साथ-साथ जो है बच्चों की जो मेमोरी है, उसके जो स्कीमास हैं, वो कितने डेवलप हैं, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि वो कितने अवेयर हैं इन चीज़ों से और कितना वो इस चीज़ को समझ रहे हैं।